Morning to all of you. Yes. So we are going to start our session. So in the last class or last session, we seen what is the use of HTML, CSS and JavaScript. We taken one example of web page and we have removed all the CSS means customized cascading style sheet. So after removing the customized style sheet, how it is looking like? It is not looking like good. Okay, it will shows as the original button of HTML. It is not looking like a very good UI. And the last class also I explain about the IP addresses. So I unable to trace the IP address of google.com, okay, or any other website. So this is a domain. When we write a facebook.com, it's a domain. Domain can understand by the human. So IP address can't understand और can't remember by human. ओके बहुत सारे IP एड्रेस हम वेबसाइट के याद नहीं रख सकते. That's why we develop as a domain that is known as name. Okay, right. Seen what is application server side backend. Okay, so today we are going to see here what is server clients etc. So before that we'll see how to find a how to trace the IP address. So using the IP address we can redirect to the website. Okay, so after removing the style sheet it is looking like this way. So how to find the IP address of any website? So simply go to the command prompt. So step to finds IP address. Step to find IP address of particular website of a particular website. So using the IP address is what? Nothing but the domain. Okay, so IP address is always unique, means unique domain. Don't write, you can don't write without writing the domain of that website, you can directly use IP address. Okay, using the IP address, so it can redirect to can redirect to that particular site. Okay, how it can redirect? By using HTTP hypertext transfer protocol is there. Okay, so the steps for how to find the IP address of particular website. So first thing, go to the start button or click on the start button. Start our window button. Start window button is there.
start window button is there. Okay, see, this is the start button. Okay, window start button is here, right? Then type run also, no problem, or directly open the CMD, that is what command prompt. To click on this start here, or you can type here to search. Okay, start or type here to search. Type here to search and write there CMD or run. If you write there the run, okay, so I'm clicking here, type here to search and can type here what? Run. Are you getting the run application is here? Run app. Yes, it is run app. Click on this run app and it will see, it will look like this. Okay, it will look like this way. Okay, so run. So you have to write here CMD means the command prompt, or type here or write CMD. Okay, CMD. So it will open the command prompt CMD. Okay, see the command prompt is open now. This is what command prompt. Okay, or the simple step I am going to write here, open command prompt. Open command prompt. Okay, open the command prompt. How to open the command prompt? Okay, once again I am going to show you. Now another way I am going to show you. Okay, just right click or just click on this here and you can directly type CMD instead of writing the run. Okay, it will shows the app, that is what command prompt. See, command prompt is app is there. In this command prompt we can write the commands. We can write the commands step by step. Okay, commands we can write there, right? We give the commands to the OS to perform the works. Prompt, command prompt. Okay, simple. Click here or run or CMD, type here the CMD and the command prompt will get open, right? Ensure that your internet connection is on. Okay, ensure that your internet connection must be on. Why? Because we are finding the IP address of live website. To ensure that internet connection must be on. If your internet connection is not on, then it will not trace the IP address of any website. That means, okay, in my system this command is not work because I have the problem in my operating system. So what is this command? We can use the ping command. Okay, so ping is not recognize internal external command. It will show in my PC, but in your PC the ping command will be work. Okay, this ping command will be work in your PC because I have installed a lot of things in my PC, that's why it's not working. So yesterday I get a problem for this, that's why I'm telling to you, if you are using now computer, so if you type there the ping command, so it will display the some things. Okay, तो आपका वहाँ से ज्वाइन किए क्या आपने शेयर करने से ठीक है चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके So if you want to find the IP address of any website or live website, so simply you need to write one command. What is that command? ns lookup, right? ns lookup. अगर आपका लैपी ओपन होगा अभी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट ऑन करके लैपी में ns lookup command. What is that command name? ns lookup. N is capital. Okay, use n is capital, ns lookup, then you can write website name. So I'm interested to write here the facebook.com. facebook.com. Okay, and just enter the button, press the enter button, so it will shows here. यहाँ पे आपको शो करेगा IP address of that particular Facebook site. Okay, this the commands you must have to write here. Write a command. Okay, write a command. Write command
This command you can write ns lookup, and here you can write ns lookup is the command. Ns lookup, and you can write here website name, website name. Okay, so for example, how can write this? Any website name, you can trace the IP address of any website, and now it will be shows. Okay, what it will be shows? Tell me IP address. बताओ. हाँ. 157 dot 240 dot 23 dot 35. See here, this is the IP address of this particular website. That is what? Facebook.com. Okay. So I want to use this site. Okay. First of all, I am going to save this file uh, for your notes purpose. .930. Okay. So I'm going to save this file. IP address finding. Yes. So this is what IP address of Facebook. Okay, here in my computer, this command is not working. Okay, due to my OS problem. So here, go to the live website, web server, any browser, and you can simply paste here. Okay. So I have pasted here the IP address, which is given from the Facebook. Okay. So let us check here whether it is working or not. Just click on this enter button. Oh my god, it's really working. Okay, so instead of the IP address, okay, instead of the facebook.com, it's directly redirected to the when I'm writing the IP address, it's directly redirected to the facebook.com. Okay, once again, take another website. ConnectSoft Infotech की website लीजिए, www.connectsoftinfotech.in. Next example. .in है, ConnectSoftInfotech.in. ConnectSoftInfotech.in. If anyone using the computer or lappy, so try this one and tell me. Okay, chat box is on. Yes. 194 dot. So first one, you can take the first one. Address. That is okay. Yes, tell me that. 195 point dot 201 174 164. Let us try this one whether it is working or not. Okay, IP address. Each every website have the unique IP address. So right here this, and let us check this. So in this my site, that is not working properly. Okay, right? Sometimes you will get such type of errors. Okay, use another IP address. Copy paste that IP address. It's redirecting. No. Okay. So use the most popular website. They have the very good servers. Okay. So google.com. Right, google.com.
So I think it's have the IP address 142.250. That means sometimes it will be dynamic, changeable रहते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हैं ना, तो हर एक कंट्री का आईपी एड्रेस और सिस्टम के हिसाब से वो चेंज होते रहता है, डायनामिक. कैन यू ट्राई दिस वन? Okay, see here the google.com is redirecting. Okay, are you using this IP address for Google? It is redirected. Okay, this is about IP addresses. So IP address having the 4 part. Okay, 1 2 3 4 like this way. So they have some unique IP address. Sometimes it will be changeable, dynamic भी रहते हैं. गूगल के सर्वर से यहाँ से 0 से लेके 164 तक ऐसे आईपी एड्रेसेस है, बहुत सारे आईपी एड्रेस है. हम लास्ट एस्टरडे हमने बहुत कुछ ट्राई किए थे. ओके, सो यूज द पर्टिकुलर कमांड ns lookup and make sure that your internet connection is on, so it will show the IP address of any website or particular website, and you can use and check it now. And this is known as domain. जो हम नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, एंड दिस इज नोन एज IP address. Okay, yes. So let us move towards the next topic. Okay, what is server, what is client, user, right? So server is what that gives the response to the clients. So it is in the networking, that is one of the machine. Server is nothing but the computer system that provide resources, data services, or any programs or any to the other machines, and machines are known as clients. Machine means client. Your mobile is also client. Your computer system is also the client. And the person who are using this mobile or computer, that person is known as user. Okay. The same user, you can use the two clients. One is the smartphone device, another one is the laptop. The two clients are there, but only one user. यूजर मीन्स जो यूज़ करते हैं उसको. ओके, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंस. तो क्लाइंट मतलब क्लाइंट ही हम ही लिखते हैं, हम ही क्लाइंट. नो नो, वी आर नॉट क्लाइंट. ओके, वी आर यूजर. सो दैट इज नोन एज क्लाइंट ओवर नेटवर्क और इंटरनेट. सो वन सर्वर इज देयर इन कॉलेज सिस्टम में. हर एक कंप्यूटर लैन में रहता है. सो वी कैन शेयर द रिसोर्सेस इन द लैन. So that is the network. It's not internet. Internet networking means there are two types of networking: intranet and internet. Intranet means that particular site or we can access within the organization. Okay, intranet means within the organization. Internet means worldwide, everywhere. Understand the difference? Internet means worldwide. Intranet means within the organization. Some of the colleges have the particular website uh, for their practical journals or manuals. Okay, प्रैक्टिकल जर्नल्स ओपन होने चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर साइट वो पर्टिकुलरली उसमें ओपन होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, यूजिंग दिस IP एड्रेस. ओके, सो दैट वेबसाइट विल नॉट ओपन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. मीन्स हमारे इसमें वर्ल्ड वाइड, बिकॉज दिस इज नॉट इन द वर्ल्ड वाइड. मीन्स www इट नॉट अवेलेबल, नॉट हैविंग द पर्टिकुलर ब्रांडेड डोमेन. ओके, सो दैट इज नॉट हैविंग. सो उसको हम बोलेंगे कि इंट्रानेट. एंड इंटरनेट मीन्स यू कैन यूज एनीवेयर, कहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज एन इंटरनेट. Okay, that is in the worldwide. So in theory, whenever the computers share resources with the clients, they are considered as a servers. Okay, so जो भी client resources share करेंगे, that is known as server. Server stores all the data associated with the websites that are hosted by it and share that information with all computers and mobile devices, okay, that need to access them. So server stores each and everything. So in the server, for example, Google server is there, Facebook server is there, and millions and trillions user data are stored in the Facebook server. Every person that upload their images, that will also store in the Facebook. And if you observe one thing, if you open Flipkart today and you are trying to search best laptop, so once you directly open
The Facebook, it is also show the recommendation. Okay, it's also show the recommendation of the laptop, right? So how the Facebook is earned like this way. So it's capture your behaviors. It's a data science, it's a machine learning, right? It's artificial intelligence, that concept that you are going to be used. So they have the lot of data. Facebook and Google's, each and every person, maximum persons are connected to the Google. So Google's having the data, और वो हम जो डेटा है वो वेंडर्स को देते हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन फाइनेंशियल पर्पस, तो उनको फाइनेंशियल के टाइप का ही डेटा देते हैं। फिर हमको ऐसे कॉल आते हैं, कुछ भी ऐसे कॉल आते हैं ना, ये हमारा डेटा लीक होता है इधर से उधर। तो आपको पता भी होगा कि फेसबुक के ऊपर केस भी लगी थी मार्क जुकर के ऊपर, कि डेटा फेसबुक ने डेटा जो है वो बेच दिया था किसी और कंपनी को, राइट। उसके टाइम पे एलन मास्क ने बोला था कि यूज़ अ सिग्नल, उस टाइम व्हाट्सअप का प्राइवेसी का प्रॉब्लम आया था, एंड एलन मास्क have tweeted that use a signal. Okay, signal is also like a WhatsApp. So now the again फेसबुक ने बोला कि हम व्हाट्सअप की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ऐसा ऐसा, फिर उनके केस का ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो एवरी कंपनी दैट टेक द ऑल दिस डेटा और सीक्रेटली वो देते हैं डेटा सीक्रेटली। ओके, सो दैट इज सर्वर्स, और जो सर्वर्स उनके बड़े बड़े सर्वर्स है, उन सर्वर पे सारा डेटा अवेलेबल है, इमेजेस हम जो अपलोड करते हैं वो सब सर्वर पे अपलोड रहता है, उनके पास स्टोर रहता है। ओके, so next one is what? Client is what? That is electronic device. Okay, again and again I am telling to you, client is not a user. Okay, client is different and user is also different. Client is the electronic device, that may be your computer, laptop, remote device or anything else. Okay, so that uses the resources of remote computer of servers, okay, or server. Client may be desktop, laptop or tablet or mobile, TV, phone, anything. TV will एक client हो सकती है, okay, एंड हम टीवी को देखते हैं तो वी आर यूज़र, वी आर यूजिंग द टीवी, सो दैट इज़ यूज़र। द डिवाइस विच इज़ यूज बाय द यूज़र, दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइंट। जो डिवाइस यूज़ करते हैं यूज़र, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। सी द डायग्राम, दैट विल बी वेरी क्लैरिफाइड टू यू। द हाँ, यूज़र इज़ व्हाट? द पर्सन हु इज़ वर्किंग और operating the client machine, that is known as user or end user. Now see carefully, observe this diagram. This is the internet connection or maybe the networking connections, internet or intranet, what maybe, whatever maybe. So we use in mobile, that is FB or Google server, so we are using by using the internet. Okay, so in the particular organization, this site will be open, that is known as the intranet. So here is a server that store the all the resources. Okay, so now the Facebook I am using from the laptop. The Facebook is also I am using from the Facebook app, that is from the smartphone or mobile, or I want to use from the desktop, or I am using from the TV. You know, TV also smart TV, हाँ, स्मार्ट टीवी आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट टीवी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। सो आजकल हमारे पास जो भी स्मार्ट टीवी है उसमें ओएस रहती है, जैसे एंड्रॉयड ओएस है, उसमें प्ले स्टोर रहता है, उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं, तो फेसबुक भी डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। Client, all are this client. These clients are send a request to the server, then server gives the response back to the client. Okay, we are using internet, so HTTP the protocol is there for redirecting। और मैंने आपको कल भी बताया कि यस पेमेंट गेटवे जब भी आता है तो आप यस ढूंढते जाओ, आप HTTP यस है क्या, एस स्टैंड फॉर सिक्योर कनेक्शन, अदरवाइज आपका बीच में डेटा ब्रेक हो सकता है और हैकर कैन हैक योर डेटा, बैंकिंग डेटा। ओके, सो क्लाइंट इज हियर एंड वी आर यूजिंग दिस डिवाइस, सो वी आर यूजर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द ईमेल, SMTP, MIME एंड ब्लॉग, फोरम क्या है, कैसे कैसे साइट्स रहते हैं। यू नो द हु इज द ईमेल इज इंट्रोड्यूस, इट्स अ साबिर भाटिया। ओके, ही इज अ साबिर भाटिया, you are Indian entrepreneur, right? So electronic mail means to send the data, to send the data by mail, right? Means electronic mail, emails. So email services, so in this we can provide attachment also,
means embed medias. It is free service to communicate with other internet users only. So email is invented by the Sabir Bhatia. It is an Indian entrepreneur, okay, who founded the webmail company, that is what Hotmail. Okay, Hotmail, Sabir Bhatia. सो 1990 से वेब हमारे सब चालू हो गए छे कहते। ओके, जो भी मैं बोलता हूँ वो सब प्रैक्टिकली शो करता हूँ। सी हियर, साबिर भाटिया इज एन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन who co-founded a webmail company hotmail.com, right, hotmail.com. सो सबसे पहले हॉटमेल और रेडिट ही चलता था। गूगल तो उतना पॉपुलर नहीं था गाइस, ओके। तो याहू था, एक टाइम याहू बेचने के लिए आया था, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, याहू तो गया था, उन्होंने ऑफर किया था याहू का, ओके, मतलब गूगल, गूगल वालों, हाँ, गूगल बहुत स्मॉल स्केल थे ना उस टाइम पे, तो मतलब ये बेचने वाले थे, ये याहू, मतलब याहू ही गूगल खरीदने वाला था उस टाइम पे। और गूगल में सिर्फ एम्प्लॉय मेरे ख्याल से उस टाइम पे 7 8 एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने, याहू थोड़ा हमारा ऐसा था कि वो खुद को बहुत बड़ा मानता था उस टाइम पे, लेकिन रेडिट भी था उनके साथ में। और गूगल को खरीदने वाले थे, तो उन्होंने बोले हमारे ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। देन दे हैव स्टार्टेड द जीमेल इन 1995, देन दे हैव स्टार्टेड द यूट्यूब्स एंड ऑल दोस थिंग, एंड दे आर गोइंग टू बिकम मोर पॉपुलर देन याहू, एंड सर्च इंजन जैसा था याहू, और रेडिट मेल से पॉपुलर, बिकॉज याहू क्या करते थे, एड्स बहुत देते थे वो। इससे क्या होता था कि यूज़र इरिटेट होता था, इसलिए दे गो फॉर द यूजर्स, हम गूगल की तरफ जाने लगे, तो गूगल का फ्लो बढ़ गया। देन दे हैव इम्प्लीमेंटेड द वन सोशल नेटवर्किंग दैट इज नोन एज आर्कुट। फेसबुक की पहली बात कर रहा हूँ मैं, ओके। फेसबुक पे के पहले आर्कुट था, आर्कुट, आर्कुट सोशल मीडिया डेवलप की। देन द सेम कॉन्सेप्ट स्टिल फ्रॉम द गूगल से चोरी किया, समझ लो थोड़ा बहुत ऐसे, सोशल नेटवर्किंग फ्रॉम मार्क जुकरबर्ग ने, ओके। जुकरबर्ग ने फिर फेसबुक निकाला, तो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं था 2008 में। सो जब भी 2008 में था, वहाँ पे भी मेरी लॉगिन थी फेसबुक में। उसके बाद कि ऑर्कुट को लोग यूज़ करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक पोस्ट कर दिए, तो हम कुछ जो सोशल नेटवर्किंग वाले लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते सोशल नेटवर्किंग में, वो 2 दिन के बाद देखते थे या 3 दिन के बाद देखते थे, 3 दिन के बाद रिप्लाई देते थे। तो मार्क जुकरबर्ग में तो उसी कॉन्सेप्ट को कैसा किया है कि फेसबुक निकाला और इसमें बोला कि इंस्टेंट, जैसे अगर आपने पोस्ट की तो आपको नोटिफाई हो जाएगा, तभी के तभी आप उसमें चेक कर सकते हो, लिख सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अचीव किया फेसबुक में। सो धीरे 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 इतना फेसबुक अपडेट हो गया कि आज के टाइम पे बहुत अपडेट हो चुका है फेसबुक। सो आर्कुट कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। बट सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट दैट इज गूगल ने ही डाला है, ओके। तो छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी गूगल, और आज सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है गूगल। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्लस हायर सैलरी, एवरीथिंग इज देयर। सो द ईमेल that is webmail means a hotmail company that is invented by the Indian entrepreneur. So it is origin is Indian, he is, okay, it's also the American businessman, okay. So hotmail company is introduced, okay, that is, he is a pass out from bits pilani, okay. He is a pass out from bits pilani, you can see here. So hotmail.com, can see the outlook, हमेशा आता है outlook, see here the outlook, right. It's a Sabir Bhatia is implemented the email first, right. So Saber Bhatia is an Indian entrepreneur that is founded a webmail. So इस टाइम पे रेडिट मेल भी था, यू इसमें ये भी था, लेकिन गूगल, जैसे गूगल आ गया, जीमेल, जीमेल 1995 में इंट होने के बाद सबसे आगे निकल चाहिए। पर वो इरिटेट बहुत करते थे, अभी भी देखो रेडिट और याहू
इनमें इसके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है उन्होंने कि एडवर्टाइज के तरफ। गूगल ने सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के तरफ ध्यान नहीं दिया था। ओके, इफ यू वांट टू सी द आर्कुट, ओके, सी हियर द आर्कुट social networking size. Okay, so that is founded in 2004. Okay, 2004. Owner is the Google, and who is the developer? Orkut, I don't know name properly. Okay, B Bukunton. Okay, is I think Brazilian something. Okay, so see here, Orkut is a social networking in this letter, and उस टाइम पे कब बंद हो गया? हाँ, सी द ब्राज़ील, यस। तो आर्कुट वॉज द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन इंडिया एंड ब्राज़ील। सो उस टाइम पे ब्राज़ील और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे ये ऑर्कुट। सो मैं भी यूज़ करता था ऑर्कुट बहुत साल तक। और ये बंद कब किया है ऑर्कुट? जब फेसबुक आया उसके 1-2 साल में ये ऑर्कुट टोटली बंद कर दिया। व्हेन इट इज़ एंडेड, कुछ लिखा है डिसॉल्व्ड एंड जनवरी फाउंडेड 18 ईयर ago। आई थिंक आज के लिए ज़माने के स्टूडेंट को तो ऑर्कुट पता भी नहीं होगा। On Google announced it will be closing. Okay, 30 जनवरी सितंबर 2014। ओके, 2014 में बंद किया है ये ऑर्कुट। यस, उस टाइम पे ऑर्कुट क्लोज किया था। द सोशल नेटवर्किंग साइट, एंड फेसबुक आया 2008 से। ओके, सो नाउ इट्स द मोस्ट पॉपुलर नाउ डेज फेसबुक। ओके, yes. Then so email is invented by the Saber Bhatia, so electronics mail for a communication purpose. Next is SMTP protocol. It's a simple mail transfer protocol that takes care of the delivering of the emails from server to one server to another. So when we mail from our email ID to any other mail ID, so there is a one protocol. Without this protocol, this mail can't send. दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मैं 2-3 दिन से वही बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज व्हाट? द सेट ऑफ रूल्स। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट govern the communication between the two parties. Okay, it is a set of rules. Just it are protocol means rules. Consider it a set of rules. हम बोलते हैं ना कि पीएम मोदी जी ने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, ये प्रोटोकॉल इनके प्रोटोकॉल में आता है। इट्स अ रूल्स। प्रोटोकॉल मीन्स इट्स अ रूल्स। ओके, सेट ऑफ रूल्स आर देयर, that is the protocol. So it is the protocol. Simple mail transfer protocol is takes care of delivering the emails from one to another. So जब भी हम मेल सेंड करते हैं एक मेक को, सो देर एग्जिस्ट द वन SMTP. ओके, सो simple mail transfer protocol is there for sending the emails. Then we have the MIME protocol there. When we send the email with having the attachment, having the multi-purpose attachment, what is that attachment? Image, video, media, any media, audio, video. So that purpose MIMEs will be used. The multi-purpose internet email extension is exchange different kinds of data. Different kinds of data means images there, audio, video files. When you send the audio, video files in the email, so they can be used here this protocol. एंड अभी हम जीमेल वगैरह कोई भी मेल यूज़ करते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स उसके अंदर रहते हैं। ओके, सब प्रोटोकॉल्स उसके अंदर है, वही प्रोटोकॉल से हम सेंड करते हैं सब कुछ, वो हमको दिखता नहीं है। ओके, देन ब्लॉग्स, व्हाट इज मीन बाय ब्लॉग्स? हम वेबसाइट देखते हैं कि हम बोलते हैं कि इनका ब्लॉग्स है, so there are some information. Blogs is nothing but the some informations. So it is always updating website. तो जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट बोलते हैं, ब्लॉगर्स जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें हमेशा कुछ डेटा अपडेट होते रहते हैं, सब अपडेट कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे उनका टॉपिक अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में डेली क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में अपडेट होते रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म मीन्स जो फर्स्ट शो, सॉरी फर्स्ट लास्ट में, और जो सबसे लास्ट में आता है वो फर्स्ट शो होता है, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, पहला डाला वो नीचे जाएगा, दूसरा डाला उसके ऊपर, तीसरा जो सबसे लेटेस्ट डाला वो सबसे ऊपर रहेगा, दैट इज द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो दैट इज अ ब्लॉगिंग साइट्स, वी कैन क्रिएट अ ब्लॉगिंग साइट्स आल्सो। ओके, आपको इसमें आपको एक वेबसाइट बनानी है कंपलसरी। जस्ट टेक इन योर माइंड एनी टॉपिक, एक टॉपिक आपको डिसाइड करके रखना है कि हमको इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है। सो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इस वेबसाइट में आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो ब्लॉगिंग मीन्स दिस,
our daily website is updating. So many blogging sites are there. Then forum means what? So that is what online discussion. So can you tell me any website that is a forum? Any forum website? Can you tell me? It is an online discussion website to exchange the resources with each other. Yes, anyone? You can use the chat box also. So ऐसी कोई वेबसाइट बताए आपको कि जिसको हम फोरम कहते हैं? ऑनलाइन डिस्कशन इज देयर. हम कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उसमें कुछ कोई भी वहाँ पे आंसर बता देते हैं. दैट इज़ अ फोरम, ऑनलाइन डिस्कशन. डू यू नो सच टाइप ऑफ वेबसाइट्स? एनी वेबसाइट? गूगल मीट जो हम यूज कर रहे हैं वो भी वही होगा ना सर? नहीं नहीं, गूगल इज़ अ सर्च इंजिन. उससे गूगल में हम जो नहीं नहीं, जो वेबसाइट. हम यूज कर रहे हैं अभी आप, हम जो यूज कर रहे हैं गूगल मीट. अच्छा, गूगल मीट. नो, वी कैन नॉट से. एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ओके, but something questions are going to be right there and someone is come here and they are going to write the answer of that. ऐसे टाइप से कुछ forums. Stack Overflow, you know? Stack Overflow. This is the most and most popular website, most popular for the developers or developers. Quora also there, sir. Yes, Quora also Quora. there. Yes, very good. Yes, that means also. Just I am Quora expecting this one. language. Yeah. So the Stack Overflow, Quora. So यहाँ पे हम जो भी हमको problems आते हैं, then I am going to post their question also. Okay. Or someone they will try to get the answer. Okay. And उसमें और Greek for grip is also there. Not Greek for Greek. So forum, इसको हम forum कहते हैं जिसमें कुछ questions हमको आ गए या फिर हम कुछ try करते हैं. Problem आ गया हमको कि 401 not found. What is the 401 error is there? Okay. So it will gives an someone gives the answer for this. Okay. What is 401 error? Unauthorized HTTP. So someone is given here answer ऐसे टाइप के कुछ. How to fix 401 not authorized? Greek for Greek. I am from the Greek from Greek. Okay. Geeks for geeks. Okay. Geeks for geeks. So someone conversion written here. Okay. Article contribute by something. Okay. So someone gives here one question how to fix that and someone gives a answer there. That is this type of website that is known as the forum sites. Okay. So online discussions are there that provide online discussion. Now the HTTP, you know, that is what HTTP is, a transfer protocol, hypertext transfer protocol that exchange, that is for exchanging the hypertext documents in the worldwide. Okay, exchange the hypertext documents, so means redirected. So it send a request to the server. Only HTTP documents means the hypertext documents. Okay, that is written in HTML whatever that. So worldwide. So जैसे हमने IP एड्रेस लिखा था. ओके. सो यहाँ पे हमने कुछ आईपी एड्रेस लिखा दैट इज़ टोटली ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड. ओके. इफ़ यू वांट टू चेक कि वो आईपी एड्रेस में एचटीटीपी ऐड हुआ था क्या? यस, डेफिनेटली. वो आईपी एड्रेस में अगर एचटीटीपी ऐड नहीं होता था तो सर्वर में कॉलिंग नहीं जाता था. राइट, सर्वर में कॉलिंग नहीं जाता है. ये हमने ऐसे लिखा है. दिस इज आईपी एड्रेस फॉर इन गूगल. ओके. सो इट इज़ redirected to google.com. राइट. सो एचटीटीपी इज देयर मैंडेटरी, वो ऑटोमेटिकली आता है. And S stand for secured. That is what SSL certificates. So ensure that जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमेशा ये चेक कर लीजिए कि वो सिक्योर्ड है या नहीं है. मीन्स HTTP यस अवेलेबल है ये इसमें या नहीं है. तो हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं हमको पता ही चल जाता है. ये देखिए, ये यहाँ पे लॉक लग के है. लॉक का साइन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? ये दिस वन. Okay, when you click on here, can check right now. Copy and paste. This is secure. That means it's a secured. Find here HTTPS is there.
मीन्स द SSL इज इंस्टॉल इन दिस वेबसाइट. SSL सर्टिफिकेट होता है सिक्योर्ड वाला. सो जब भी हम डोमेन होस्टिंग परचेस करते हैं तो दे कैन आल्सो प्रोवाइड अस SSL सर्टिफिकेट. सो व्हाट इज SSL? इट्स अ सिक्योर्ड प्रोटोकॉल रहता है, सिक्योर्ड सर्टिफिकेट. So third parties are going to provide you the SSL certificates, secure sockets layer, that is encryption, SSL certificate, right? आप परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सिक्योर सॉकेट लेयर. यस. इट्स अ साइफर टेक्स्ट. मीन्स साइफर टेक्स्ट मीन्स व्हाट? दैट इज डेटा इज encoded. Encoding, decoding, you know very well. Encoder, decoder. जब भी हम पासवर्ड लिखते हैं तो जो डेटा सर्वर में स्टोर होता है पासवर्ड, वो उनके सर्वर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कौन सा पासवर्ड लिखा. ओके. जब आप यूज़र एंटर करते हैं पासवर्ड, देखो आप कोई भी फेसबुक में, मान लीजिए अगर आपने फेसबुक में रजिस्ट्रेशन किया है और वहाँ पे आप क्या एंटर करते हो, पासवर्ड लिखते हो और यूज़र नेम लिखते हो. यूज़र नेम तो दिख जाएगा, लेकिन जो पासवर्ड है आपको क्लाइंट को ऐसा दिखता है क्लाइंट साइड में. सर्वर साइड में जब डेटाबेस में स्टोर होता है टेबल्स में, डीबी में, तो उनको वो पासवर्ड दिखता है या ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है उनके टेबल में डेटाबेस के. अगर उनको ऐसा दिखता है तो दिस इज़ नॉट आवर सिक्योरिटी. उनको हमारा पासवर्ड अगर पूरा दिख रहा है, एबीसी हमने लिखा एबीसी उनके डेटाबेस के टेबल्स में, सर्वर में, तो फिर हमारे कुछ सिक्योरिटी नहीं रह गई. राइट. सो दे यूज देयर हैश की. हैश की. ये ऐसा भी नहीं दिखेगा पासवर्ड और ये ऐसा भी नहीं दिखेगा, तो कैसा दिखेगा? ये कुछ कुछ भी दिखेगा. कुछ भी ऐसे इतना बड़ा हैश की जनरेट हो जाएंगी. ओके. लाइक दिस वे. So that will also unique or different. It's changing for each and every person. So as well as developer and user. यूज़र को तो हमको पता रहेगा, हमको तो इसको पता है कि इसकी वैल्यू ये है. ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, हमको पता है. सो दिस की विल बी जनरेट. दिस की विल बी जनरेट. पहले के टाइम पे ऐसा ही स्टोर होता था. अभी हम सेंड कीज़ वगैरह, हैश कीज़ वगैरह यूज़ करते हैं डेवलपर्स. सो जो यूज़र नेम, जो भी पासवर्ड डाल रहे हैं, जो हमारे सर्वर में स्टोर हो रहा है, तो उनका पासवर्ड हमको दिखना नहीं चाहिए. डेवलपर को अगर पता चल गया कि यूज़र के पासवर्ड, तो वो लीक कर सकता है डेटा. सो देयर पासवर्ड शुड बी इनक्रिप्टेड. दैट इज नोन एज इनक्रिप्शन. ओके. Encryption is there. That is also encryption, no problem. This is also encryption. The data is encrypted. Then it will decrypted as like this. Okay, this is हैश की. हैश की से वो जनरेट करते हैं. अब देखो जब सर्वर साइड जब पढ़ेंगे जावा या PHP और एनीथिंग एल्स, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो हमारा डेटा ऐसा रहना चाहिए फेसबुक का, मतलब पासवर्ड का, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द पासवर्ड. ऐसे टाइप के कुछ भी हमारा डेटा जनरेट होना चाहिए. ओके. सो वैल्यू विल बी दिस. दैट इज नोन एज इनक्रिप्शन. ओके. डिक्रिप्शन मतलब शो होना हमको. जैसे हम पासवर्ड हम लिखते हैं 1 2 3 डाला है, वो हमको दिख रहा है. ओके. हम इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब ऐसा इनक्रिप्ट करते हैं, हमने इनक्रिप्ट किया. अगेन वी आर गोइंग टू डिक्रिप्ट दिस वन. इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, these are the techniques. That is what ciphertext. Ciphertext is a encrypted text. That is a plain text is what you have before encryption. Plain text means what? Before you have the encryption. Ciphertext means what? That is encrypted in result. Okay, that is encrypted. Whatever you are going to write, that is encrypted. The term cipher is sometimes used a synonym for the ciphertext, but is more properly means the method of encryption rather than the result. Okay, so cipher हम use करते हैं ciphertext. Cipher is nothing but the ciphertext. Okay, but it is encrypted. Okay, ciphertext मतलब encrypted हुए वाला text, that is ciphertext. Okay, so see here how many types of web applications we have. Already I have told you
So static and dynamic, and sometimes most commonly use the semi dynamics. Actually it's not a semi dynamic, लेकिन अभी क्लाइंट के जैसे रिक्वायरमेंट रहते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा वेबसाइट मुझे डायनामिक नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का पेज और रजिस्ट्रेशन का पेज, लॉगिन पेज थोड़ा वो हम डायनामिक बना लीजिए, बाकी सब साइट स्टैटिक रखिए। स्टैटिक मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब डेटा एंटर नहीं कर सकते, जस्ट हम वहाँ पे व्यू कर सकते। स्टैटिक इज ओनली फॉर व्यू, डायनामिक वी कैन enter the data, okay, and send the data to the server, whatever. So that is what's dynamic. So see, your static web pages, in the static web pages that include directly, that is indirect, unable to interact directly with the these pages, you can't interact directly. That is for example HTML and CSS. Dynamic pages means what? You can redirect it, okay, the end user can able to interact directly with these web pages. For example HTML, CSS, JavaScript are there, and this logic is written in the server side technology, for example Java, PHP, like that way. So आपको dynamic web page दिखेगा having the some registration form, okay, it's a dynamic web page is there. See here something data, okay, we are going to write here, and you can do the login button, okay, something is going to be happen. So it's a dynamic, you can say. This is not original one. Yes, now this is original one. ओके, सो डायनामिक वेब पेजेस आर देयर। तो यूआई हम डेवलप करते, बटन वगैरह, टेक्स्ट फील्ड वगैरह सब भी हम लिखते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन देयर तो दैट विल बी रिडायरेक्टेड, डेटाबेस गो टू द डेटाबेस, ओके, वो मैचिंग डेटाबेस चेक करेगा वो। सो दैट इज अ स्टैटिक एंड डायनामिक, ओके। सो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेब डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड अ वेब एप्लीकेशंस। So Facebook is a web application. In the Facebook there are so many pages, okay, it's a registration page, login page, okay, this is another page, then home page, user home page is there. So a lot of pages are there, okay, pages are there. See here I am right here reg is the name of page, okay. See url what I am writing here, reg is the name of page. See the registration form is open here, okay. Reg is what? Pages, web pages. This is a dynamic web page, okay, it's a dynamic web page. See, dynamic web page is this, we can enter data here, okay, new password, date of birth is here, right? It's a dynamic. Sign up button is here. After clicking, the data is goes to the database and create your username and password, then you can log in. It's a dynamic, it's a dynamic page. You can make it a static also, so nothing is going to be happen after clicking here. So static व्यू ऐसा डायनामिक दिखेगा, लेकिन क्लिक होने के बाद कुछ नहीं होगा. सो यू कैन क्रिएट, सो हार्डली जैसे हम 5-10 दिन में भी आप ये वाला यूआई क्रिएट कर सकते हो, जब हमारे जैसे क्लासेस होते हैं वैसे, ओके. सो ऐसा आप यूआई क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक यूआई ये वाला, ओके. लेकिन आप जहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे ना, वो डेटा डेटाबेस में जाएगा नहीं, लेकिन हमारा एम है कि यूआई डेवलपमेंट. सो वी डेवलप, यूआई डेवलपमेंट इंजीनियर्स अलग रहते हैं, सर्वर साइड डेवलपर्स अलग रहते हैं, और जो सर्वर साइड और यूआई डेवलपमेंट दोनों भी चीज़ करते हैं उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, ओके. सो दे हैव इन एमएनसी आल्सो द सेपरेट यूआई डेवलपर रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको एक ही काम पूरा दिया नहीं जाता है, तो यूआई डेवलपमेंट का काम एक को दिया जाता है, यूआई डेवलपर को. और ये जो लॉजिक लिखने का काम है, सर्वर में डेटा जाना चाहिए डेटाबेस में, वो डेवलपर को दिया जाता है, ओके. सेपरेट सेपरेट वर्क्स आर देयर. So UI developer, you can become a UI developer, so we can develop the such a UI, no problem, in HTML session, JavaScript. हमारे सेशन में हम ये UI डेवलप कर सकते हैं, ओके. So this is UI, it's a it became a static, okay. So REG, it's a page is there. तो हर एक पेज, हर वेबसाइट में lot of pages are there. That web pages are combined at website, that is known as web application, okay. The website or web application collection of the web pages or web documents. So these are classified into the static web application and dynamic web application. Static web application, this business logic can't handle, okay. Can't able to handle the business logic, we can say that is a static web application. Business logic means जो server side में लिखा रहता है, जो हमको दिखता नहीं है,
और जो क्लाइंट साइड में लिख के रहता है वो हमको दिखता है। तो क्लाइंट साइड कौन सी टेक्नोलॉजी है? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दीज आर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे हम, वहाँ से UI का कोड हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम कल ही हमने देखा था व्यू पेज सोर्स, यू कैन कॉपी दिस कोड। ओके, ये जो है ये क्लाइंट साइड कोड है, मतलब HTML में लिखा है। HTML से इसे जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, तो ये हमको ये हम कॉपी कर सकते हैं। सो दिस क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी विच रन बाय द ब्राउज़र, कौन रन करता है? ये ब्राउज़र रन करता है। और इसके बाद जो बटन पे क्लिक होने को डेटाबेस में जाना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है? वो लिखा है सर्वर साइड में। कौन सा लैंग्वेज में लिखा है? PHP में, PHP कोडिंग में लिखा है। ओके, दैट इज़ बैक एंड डेवलपर। सो वो कभी शो नहीं होता है, राइट? अगर वो शो करना चालू कर देंगे तो डेवलपर का कुछ काम ही नहीं बचेगा, और हर लोग वो कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और खुद ही साइट बनाते जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ लॉजिक, बिजनेस लॉजिक इज देयर। सो the application which can't able to handle the business logic, that application is known as static web pages. Static apps application contains a client layer only. We can develop the static web application ST using HTML, provides a look and feel, CSS वगैरह, handle a client business requirement logic, can use the JavaScript also. Okay, validation purpose you can use the JavaScript. So in the last example I have also show you the one website MahaDBT. Okay, so the logic is before sending to the server, before sending the request to the server, it is handle only the in client side. Okay, it is handling only the client side. Suppose I am not writing here anything username, and I am clicking here the login button. See here the JavaScript is says required username. This is the client side technology. We have not sent this request to the server. Okay, you required something username. Okay, I am writing. Now I have not written the password. Now click on the login, required password is showing here. It's a client side validation, so I am writing something here. Then again it will show the required captcha. It's a client side validation, मतलब हमारे साथ ही हो रहा है, अभी तक वो डेटा सर्वर में भेजा नहीं है चेक करने के लिए। ओके, अभी तक हमने डेटा भेजा ही नहीं है सर्वर में, सेंड ही नहीं किया है कुछ चेक करने के लिए। सो आई एम राइटिंग समथिंग, ओके, wrong captcha I have written. Okay, now see here processing is there. Okay, processing is there, right? Have you observed carefully processing? So जब हम क्लिक किए और प्रोसेसिंग, जब ये कीवर्ड आ गया प्रोसेसिंग, राइट, दैट मीन्स द डेटा इज सेंड टू द सर्वर नाउ. It's a server validation. So that is written in the business logic, and dynamically this captcha is changing. Okay, that is a logic from the server side. It's a logic from the server side, because you send the request to the server, it sent it, then it's sent, request sent हो गया, then this check that कि वो कैप्चा इनकरेक्ट था, अगेन सर्वर में हम गए नहीं, हमको रिटर्न आ गए, हम गए नहीं अंदर, ओके, होम पेज में गए नहीं. सो देट विल गिव्स एन एरर, प्लीज एंटर द captcha properly. Okay, so client side validation is there, client side. We can use the logic also for JavaScript. We can't able to maintain the end user interaction using the static web applications. So end user interaction not proper there. Okay, because of the static, we are not going to send the data to the server. Okay, next dynamic web page. So application are able to business logic. Okay, business logic. So suppose can see one calculator. Calculator is there. Calculator में हम send नहीं करते हैं server. Okay, see the one calculator, standard calculator. Oops, could not found. Okay, 1 plus, click here, 1 plus 1 is equal to 2. Okay, see here 1 plus 1 is equal to 2. It's only client side, it's not a server side. ठीक है, सर्वर साइड में भेजा ही नहीं है, क्लाइंट साइड में वैलिडेशन और ये हो रहा है. सो दैट इज रिटन इन द जावास्क्रिप्ट टोटली. क्लाइंट साइड, सर्वर में गया नहीं हो, ठीक है, क्लाइंट साइड. So now if you want to send the data to the server side, suppose can go for the any other website.
Okay, we have the Facebook website. Our registration page is there. Yes. So when you return here some information, okay. So suppose I am writing something here and this and click on this login button. So it's sending the data to the server and checking where this username and password is available in the server or not. Yes, data is sent to the server and checking now. Okay, now what it is showing email address or mobile number you enter isn't connected to your account. That means see here in address bar what you are going to see this key token generated here. Okay, this token is generated. Sent to the server. I'm checking that this email address is not found in their databases or anything else. Okay, so जिनके account उनके database में ये available नहीं है. Right, sometime if you return the email address is correct and you enter the wrong password, again it will be checked and give you that this password is not valid. Username is okay but password is not valid. So it's giving from server side. So that the code is written is what, that is a सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. जो भी कोड वो लिखा है जिसको हम बोलेंगे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, दैट इज अ बिजनेस लॉजिक इज देयर दैट परफॉर्म द बिजनेस लॉजिक दैट इज नोन एज अ डायनामिक वेबसाइट्स. It's a dynamic web page. Okay, it's performing the business logic, right? So the application which can able to handle the business logic that is known as dynamic web page. MahaDPT site is also the dynamic web page. Fully dynamic website is there. Okay, the scholarship website is fully dynamic website. IBPS website, any other जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करते हो, यूजर नेम पासवर्ड आईडी क्रिएट होती है, फिर हम आपको उस पर लॉग इन करते हो, होम पेज दिखता है. लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर आर द डायनामिक वेबसाइट्स. Okay, so all are these dynamic websites. So it's a static page. See here, this site is now it's a static page. When I click on this application, so it's a dynamic page now. Okay, this is the dynamic one. See, it's a dynamic one, and when we click on here, the data is sent to the server from login server or forget password. That is retrieved from the data from server. It is retrieved from the server. So जहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स आ गया है और यहाँ पे बिजनेस लॉजिक आ गया है. ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस लॉजिक. द सर्वर साइड टेक्नोलॉजी इज देयर दैट परफॉर्मिंग मैपिंग. ओके, so require request response and particular things we are getting from the server. If you request to get the forget password, it will give you the forgot password. Okay, जो भी पासवर्ड दिखा है तो sometimes they will check you whether you are वही पर्सन है क्या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको कुछ मांगते हैं. ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, वाट एवर इट में भी. सो ये चेक करने के लिए मांगते हैं. तो वहाँ पे अगर आपके डेटाबेस के सर्वर के साथ मैच हो रहा है देन इट विल गिव द रिस्पॉन्स, मीन्स आपको वैल्यू दे देगा कि नहीं भाई ये आपका पासवर्ड है, लिख लीजिए. ओके, ऐसे टाइप से वो परफॉर्म होता है. दैट इज अ बिजनेस लॉजिक इज परफॉर्मिंग, दैट इज मीन्स इट्स अ डायनामिक वन. So this type of application that contains at least two layers, it's a client and business logic. If you need to store the data to then we are going to use the data layer. Data layer means a database is there. Okay, database is connected there. So we can develop the client layer using HTML, CSS, JavaScript layer. Business logic we can perform the language that is used the PHP, .NET, Java, etc. Python also we can use. Django framework is used. Django. Okay, if you want to build a web application in the Python, so the Django is used. Okay, Django framework is used, and Flask is also there. Pyramid also there. Lot of frameworks are there. We can store the end user data using the any database like MongoDB, MySQL, MS Server, SQL Server. Okay, MySQL Server, then Oracle, Postgre. Most of the databases are available. Okay, so you need to do, you have to learn first UI development, learn any server side technology that may be Java, PHP. Okay, then learn any database. This is very important. UI technology, HTML, CSS, JavaScript, we are covering here, no problem. Server side technology, after completion of HTML, CSS and JavaScript, you can go for the server side as well as database.
learn any database, that is RDBMS, RDBMS, relational database management system. So we can use the MySQL, Oracle. So there are some addition for this Oracle. They provide you the license. So you can go for the free version for Oracle, and MySQL is totally free open source. MongoDB, it's not a relational database. MongoDB, okay, it's a no SQL data type. No SQL database is there. So nowadays MongoDB is most popular because of min stack and mun stack. Okay, yesterday I have told you, no, min stack and mun stack. Min stack or mun stack for web application development. A stand for AngularJS, R stand for React.js. So M stand for Mongo. Mongo is database is common. Okay, it's the most popular nowadays Mongo database. So you can learn the any database software. That is okay. ओके, ये आपको इतना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन totally understand how the web application is built. Process, you know the process first, that's it. Okay, so we can store the end user data using the any database, right? So each and every application, they have the registration form or login form, they have the database. Okay, they must have the database. Without database they can't work. Okay, see here we are going to store this data to the database. Yes, कि हर एक वेबसाइट को डेटाबेस अवेलेबल है जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है. सो देयर इज़ अ डेटाबेस, सो वी कैन स्टोर द डेटा टू द देयर सर्वर. उनके सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर हो जाता है. ओके, सो टुडे